O level May June 2014 variant 22. Okay जी, पहला क्वेश्चन देखें बच्चों. In the first question, there are some compounds given and ClF3, CH4, CO, CO2, hydrogen, nitrogen, ammonia, oxygen, and sulfur dioxide. Each gas can be used more than once, and not at all. Which gas is used in making steel? अब आपको बच्चों पता है कि स्टील मेकिंग के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे O2. Okay, so O2 oxygen. Next, made by the bacterial decay of vegetable matter. हाँ जी, ऊपर भी हम देख रहे हैं, it is only gas in our syllabus which is methane. Its formula is CH4. It is available in the above list. Responsible for ozone depletion in the upper atmosphere. Yes, this is chlorofluorocarbon and only one compound is there, CClF3. तो ये होगा CClF3. Next, used to make margarine. So this we have studied in organic chemistry, yeah, chapter alkenes and hydrogenation of alkanes to form alkenes. So वो chapter है, and to convert cooking oil into margarine we use hydrogen gas. यहाँ आएगा H2. Okay, next. Farmers use chemicals to improve crop yield. Ammonium phosphate is used as fertilizer, and calcium hydroxide is used as fertilizer to reduce the acidity. Calcium hydroxide is used to reduce acidity of soils. Okay, पहली fertilizer है, दूसरा एक alkali है. The relative formula mass of ammonium phosphate is 149. It's mR. Calculate the percentage by mass of nitrogen ammonium phosphate fertilizer. Okay, so to find percentage of an element, for example nitrogen, ऊपर आएगी mass of nitrogen, और नीचे आएगी mR of the compound into 100. Let's put the values. So now you can see that there are total 3 nitrogen in this compound, 3 and over 149 into 100. So Aves has solved it. हाँ जी पूरा मल्टीप्लाई करके, नहीं ये गिवन है, ये गिवन है. Mass is ammonium phosphate की जो गिवन है ना बच्चों, this is mR actually. mR गिवन है. आप जब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, और ठहरे मैं करता हूँ. इट इज 14 multiplied by 3 over 149 and multiplied by 100. Okay, this is 28.19. 28.19 is the answer. Okay, next. A farmer adds ammonium phosphate to a field. He then adds calcium hydroxide to the field because the soil is very acidic. Calcium hydroxide neutralizes the acid in the soil. Okay, give the ionic equation for this reaction. Okay, जी हमने ionic equation लिखनी है इसकी, और अगर आप देखें तो neutralization का word आ गया. It neutralizes. When it neutralizes, the neutralization process, what happens actually, hydrogen ion and hydroxide ions, they actually combine up and form water. So this is the equation of neutralization reaction, ionic equation. So direct हम वही लिख देते हैं, बजाय इसके बनाए तो हम direct neutralization की ionic equation लिख देते हैं, H plus OH minus 1 ion, and we get water here. This is the equation. Okay, so एक्चुअली यू आर राइट कि हम रिएक्शन की लिखें, बट आप देखो उसने मेंशन किया हुआ है, उसने कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एसिड इन द सॉइल. असल में एसिड जो है सॉइल के अंदर वो हो रहा है न्यूट्रलाइज, तो एसिड और ये जो है अब आपके सामने दिस इज द बेस और एल्कली, एंड इफ इट इज एल्कली इट गिव्स अवे OH minus 1 ion and acid gives away H plus 1 ion. So these two ions combine to form water. So this is always ionic equation of neutralization reaction. कहीं भी आपने ये लिखनी है. Okay. Okay. The next part. The calcium hydroxide reduces the effectiveness of ammonium phosphate fertilizer because it reduces the nitrogen content. Okay. Explain why adding calcium hydroxide reduces the nitrogen content. And हमने explain करना है बच्चों. तो आपको पता है कि whenever an alkali reacts with any ammonium salt, I mean fertilizer, the products are salt plus water plus NH3 gas. तो असल में NH3 gas
is formed here and that escape into the air. So as there is nitrogen in the ammonia, so nitrogen content is lost from the soil. तो हम यही लिखेंगे कि one of the product is ammonia is NH3 that is escaped into air. So this is loss of nitrogen. ये इसमें आएगा जी. नेक्स्ट देखते हैं. जी नेक्स्ट पार्ट सी देखें. Okay, part C. A sample of ammonium phosphate can be produced by the reaction of aqueous ammonia and phosphoric acid. Okay, 25 cm cube of 1.25 mole per dm cube phosphoric acid is neutralized by 45.3 cm cube of aqueous ammonia. Okay, calculate the concentration of ammonia used here. ओके लो जी बच्चों, हमारे पास जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं. तो दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज अगेन वॉल्यूम. ओके, अमोनिया की क्या क्या चीज़ हमें गिवन है बच्चों. अमोनिया का सबसे पहले देखते हैं. सो अमोनिया का हमें गिवन है वॉल्यूम और वो कितना है 45.3 cm3. ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है. ओके, फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन का बच्चों क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम इनटू 1000. ओके या बिल्कुल वहीं से ही बना ना जब सी को सेलेक्ट बनाए. ओके, नाउ वी हैव वॉल्यूम बट वी नीड मोल ऑफ अमोनिया. वो कहाँ से निकालेंगे, वी विल फाइंड मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड देन बाय द रेशियो मेथड वी विल फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया. तो मोल अमोनिया निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे लाके, तो वैल्यू हमारे पास जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी. तो ले देखते ये इसके हमने सबसे पहले निकाले हैं. इसकी जो क्या चीज़ें गिवन है, वॉल्यूम इसका गिवन है 25 फॉर्मूला मोल निकालने के लिए कौन सा लगेगा, CV ओवर 1000. ओके, तो जी वैल्यूज पुट करते हैं और 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000. जी तो ये देखते हैं कि ये क्या निकलता है. मैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ. सो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय 1000. आप लोगों ने जो सादा सॉल्व करें चेक करना कहीं गलती ना हो जाए कोई. तो जी मोल हमारे पास आए यहाँ 0.03125, 0.03125 कर लें. सही. सो नाउ लेट्स यूज रेशियो मेथड. अब रेशियो मेथड में बच्चों आप देखें कि हमारे पास NH3 है और रेशियो फॉस्फोरिक एसिड. अभी हमने फॉस्फोरिक एसिड की चीज़ें निकाली है मोल वगैरह. फर्स्ट वी राइट द कोफिशिएंट्स. अमोनिया कोफिशिएंट इज 3 एंड phosphoric acid coefficient is 1. सबसे पहले ये लिखते हैं coefficients and then their moles. So mole of phosphoric acid is 0.03. इसके मोल x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 3 से जस्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी पॉइंट बोले अमोनिया. अमोनिया के मोल कितना है, जस्ट पुट द वैल्यू इन द formula of concentration for ammonia. So mole is 0.09 and volume is 45.3 into 1000. और इसको चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर आता है. सो 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 45.3. सो वी गॉट द आंसर 1.986. कितना आंसर नहीं कितना आंसर 1.986.
What's the answer? हम्म कौन सा लिखा है? अमोनिया 2.07 लिखा तो निकाला तो ये 2.07 and we got the answer almost 2 because यहाँ ना मैंने वैल्यू ली थी ना। अब जो देखिएगा यहाँ वैल्यू थोड़ा चेंज आ रहा है हमारा आंसर 1.99 तकरीबन आ रहा है 2 के करीब बट वहाँ वैल्यू 2.07 है ना। सो वो यहाँ इधर देखिएगा अगर मैं यहाँ करता ना जो मोल निकाले थे फॉस्फोरिक एसिड के 125 के साथ दिखता फिर हमारा आंसर ठीक आ जाना था मतलब वही एग्जैक्ट मैच करना था तो हम वो डेसिमल के बाद बच्चों आप हैबिट बना लें 4 या 3 डिजिट्स को ऐसे लिखें so I always write up to 4 or 3 decimal places so it was 0.03125 multiplied by 3 so it is 0.09375 तो देखो ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है तो ये जो हमारे पास यहाँ आ रहा है ये आ रहा है मैं इसको erase करके लिख रहा हूँ जब हम यहाँ 125 लगाएंगे then we will be getting answer here 0.09375 now if we put this value mole here 375 and then we get the answer okay so 0.09375 and multiplied by 1000 and divided by 45.3 okay we got the answer 2.07 okay so this is our correct answer and now next show by calculation that 4.66 gram of ammonium phosphate would be produced assume that yield is 100% इसका मतलब है कि 100% means nothing is wasted here for the product so it means हम देखें पहले हमने मोल निकाल के तो फॉस्फोरिक एसिड के जो फॉस्फोरिक एसिड के मोल होंगे वही मोल होंगे किसके अमोनियम फॉस्फेट की है ना फॉस्फोरिक एसिड के मोल हमने बिल्कुल देखिए फाइंड किए हुए हैं क्या बोला 0.03125 तो यही मोल उसके होंगे बट उसको उसके एमआर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है और एमआर भी उसने दी हुई है हमें ओके सो जस्ट वी हैव टू फाइंड मोल एंड मास तो मोल इसके वही होंगे जो अमोनियम के होंगे सो मोल ऑफ सॉरी फॉस्फोरिक एसिड के जो मोल होंगे वही इसके मोल होंगे सो मोल ऑफ H3PO4 is equal to mole of ammonium phosphate and it is 0.03125 okay now we need to calculate mass so mass is equal to mole into mr so mole is 0.03125 multiplied with mr 149 so okay 149 sum इसको multiply कर देते हैं so we get the answer 308.3 okay say so it is 3 it is 308.4 so this is the answer okay the next point the next part in practice the actual mass of ammonium phosphate produced is 2.93 देखिए ये actual mass का मतलब क्या actual yield so this is actual yield okay so calculate the percentage yield तो percentage yield का formula बच्चों क्या होता है so percentage yield is equal to ऊपर आती है हमेशा actual yield नीचे theoretical yield multiplied by 100 okay so now here जो ऊपर आपने बच्चों निकाल कर आए हैं ना वो theoretical yield है okay तो ये जो है दिस इज जो हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं दैट इज ऑलवेज theoretical yield and which the examiner gives us that is always actual yield okay so let's put the values so actual yield is 2.93 and the theoretical yield is uh,
ओके, गलती तो नहीं होगी, बहुत फर्क आ रहा है, 308.36 मतलब 100। नहीं नहीं, बच्चों बच्चों एक सेकंड, ऊपर लगता है गलती हमने कर दी, मोल और 149 का आंसर दोबारा चेक करते हैं, एक सेकंड, 0.03 125 मल्टीप्लाइड बाय 149, इट इज 4.65, सॉरी, मैं भी गलती ना, फर्क कैसे आ रहा है, ये जो ना बच्चों, ये कैलकुलेट करने में गलती लगी थी, इट इज 4.656, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू नीचे आ गई, ओके, सो इट इज 4.656, ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो 2.93 डिवाइडेड बाय 4.656 और मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 62.92, 62.9% ये आ गई हमारे पास, ठीक है जी, तो बस कैलकुलेशन बड़े ध्यान से इसकी करनी है, ओके, और जो है ना, मतलब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि कोई इतना फर्क नहीं आ सकता, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में इतना फर्क नहीं आ सकता, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, related to the organic chemistry polymers, okay, so protein, carbohydrates and fats are natural macromolecules, the partial structure of the protein is shown below, okay, name the linkage that joins the monomers units in a protein, जी बच्चों यहाँ आप देख लें, हाँ जी, बार बार आपको ये वाला लिंकेज यहाँ नजर आ रहा है, एंड दिस लिंकेज इज amide linkage, ठीक है, okay, name a synthetic polymer that has the same linkage as protein, nylon, नायलॉन, और नायलॉन में बच्चों अमाइड होता है, टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होता है, बट दिस इज नायलॉन, ओके, proteins are hydrolyzed to give a mixture of the colorless amino acids described with the aid of a label diagram. How paper chromatography can be used to identify the amino acids present in a mixture of amino acids. So we have to draw the diagram of chromatography. Okay. So chromatography का बच्चों बड़ा एक सिंपल सा आप याद रखें, सबसे पहले पेपर इस तरह बनाएंगे, हाँ वो नहीं, okay. Now near the bottom of the paper draw a line which is called baseline, या स्टार्टिंग लाइन भी इसको कहते हैं, यहाँ मिक्सर होगा, एम फॉर मिक्सर, और यहाँ जो आपके रेफरेंस सैंपल होंगे, ए बी सी, ओके, नाउ वी विल पुट दिस पेपर into a beaker in this way and fill up the beaker with the solvent so that solvent level should be below the baseline, ये बड़ी इस पे एक नंबर मिलता है, मतलब अगर ना करे तो कट देता है नंबर, okay, now process starts, and when the solvent reaches almost up to 80 to 90% of the paper, then we stop the chromatographic process, how we just take out the paper from the solvent, and then traveling of solvent stops, and this is called solvent front, ये हमारे solvent का front है, solvent यहाँ तक गया है, okay, and now we get spots, different spots in front of, for example, mixer, and in front of a reference sample, for example, so these are the reference samples, okay, so then we will find out the RF values of these spots, okay, so इतनी diagram बना देना काफी, okay, तो okay, बाकी आप इसके बारे में डिटेल हाँ रेंडमली शो कर दें, मिक्सर के सामने 2 स्पॉट शो कर दें, रेफरेंस सैंपल के कोई से 3 स्पॉट शो कर दें, 2 बिल्कुल मिक्सर के सामने शो कर दें, ऐसे करके आप रफली बना सकते हैं, ठीक है, लेबल भी इसको करना, तो ये आपका जो सॉल्वेंट है इस तरह करके, ओके, ओके जी, अब इसके हमें 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, 1-2 पॉइंट डायग्राम के होते हैं, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन के होते हैं, तो हम वही कहेंगे कि ब्रीफ फॉर्म में लिखना है, काफी ब्रीफ फॉर्म में, अप्लाई मिक्सर एंड reference samples on baseline that is drawn by lead pencil या पेंसिल भी लिखने की बात, okay, dip into the solvent
so that baseline should be above the solvent. Next point है compare the RF values. Compare the RF values of spots. और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा कि to make visible the amino acid spots use locating agent है ना, कैसे लिखते हैं use locating agent use locating ऐसे भी कह सकते हैं use locating agent to visualize the invisible spots of amino acids. ठीक है जी, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, नेम द क्लास ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड। ओके बच्चों, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, बट उसने क्लास पूछा है कि क्लास ऑफ कंपाउंड बताएं, उस पर ग्लूकोज लिखना सूटेबल नहीं रहेगा, फिर आप लिखेंगे सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर बायो की लैंग्वेज में इसको मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर्स, तो उनको मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। तो सिंपल शुगर्स या मोनोसैकेराइड्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, the diagram shows the structure of a simple fat. Okay, the fat is polyunsaturated. Okay, what is meaning of the term polyunsaturated? Poly का मतलब होता है many, unsaturated double bond, तो हम बस सिंपली ये कहेंगे there are more than one भी लिख सकते हैं, there are many double bonds. ओके, डबल बॉन्ड लिखने का एक नंबर मिलेगा और मैनी लिखने का या मोर देन अ लार्ज नंबर भी कह सकते हैं, इसका एक नंबर मिलेगा। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि तीन की तीन लाइनें फिलअप करें। अच्छा जी, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट द फैट इज अनसैचुरेटेड। आपको पता बच्चों, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड वी ऑलवेज ऐड एक्वस ब्रोमीन, तो यहाँ भी हम डालेंगे एक्वस, नेम ऑफ रिएजेंट एक्वस ब्रोमीन, और रिजल्ट क्या होगा, कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, है ना। नहीं, कलर चेंज खाली लिख देंगे, उसका नंबर नहीं मिलेगा। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं इट ब्रोमीन जस्ट डीकलराइज, उसका नंबर नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे लिखते हैं कलर जस्ट फेड्स, उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, या कहते हैं सोल्यूशन गोज टू कलरलेस, उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। हमने प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा कि ब्राउन टू कलरलेस, इसका नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, नेम अ सिंथेटिक मैक्रोमोलेक्यूल दैट कंटेन द सेम लिंकेज एट फैट। फैट का बच्चों काउंटर नेचुरल पॉलीमर, सॉरी फैट नेचुरल पॉलीमर है, फैट का काउंटर सिंथेटिक पॉलीमर टेरेलिन होता है। हाँ, इसमें एस्ट्रो लिंकेज होगा टेरेलिन। आई गेस ये क्लियर है सारा। Question number 4. Only liquids that contain moving ions can be electrolyzed. These liquids are called electrolytes. Complete the table which show the products formed when some liquids are electrolyzed using inert graphite liquid. Inert है, मतलब इलेक्ट्रोड साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। Okay? तो पहले देखिए आयन चेक कर लें। ओके, आयन चेक कर लिया आपने, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आयन है। रेक्टिविटी सीरीज में बच्चों कॉपर और हाइड्रोजन से कॉपर नीचे होता है रेक्टिविटी सीरीज में, या डिस्चार्जिंग सीरीज उसको कहते हैं, जो नीचे होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन जो है जाएगा, और नेगेटिव आयन में से कौन जाएगा कि हाइड्रोक्साइड में जाता है। सल्फेट नेवर एवर डिस्चार्ज, ये आप बात याद रखिएगा। एंड व्हेन एवर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज वी ऑलवेज गेट ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट। ओके, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कौन जाएगा, पॉजिटिव में से कॉपर जाएगा। सो कॉपर आपका जो है ना वो प्रोडक्ट होगा। ओके, अच्छा चूंकि उसे देखे तो नीचे नाम लिखे हुए ना, तो आप भी नाम ही लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखना जरा यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसने नाम नीचे मेंशन किए हुए, तो मुझको जरा फॉलो करना होगा।
OH जाएगा, हाँ ये देखो OH जाएगा तो ये देखो ये 4OH वाला, हाँ ये OH2O plus O2 plus. so main product is oxygen here because water is already present in the solution, so water is not considered as a product. Okay जी, so your product at positive electrode oxygen and as a negative electrode copper according to the discharging series. Okay, molten lead bromide. वह जो molten lead bromide में ions में लिख दी, now we know negative ion always goes to the positive electrode, so you will be getting bromine here. तो बड़ा molten को जज करना तो सबसे आसान होता है, और lead जो positive है वो lead उधर चला जाएगा negative पर, तो lead metal बनेगा. अब हमने ions नहीं लिखने, substances लिखने, neutral substances लिखने हैं टेबल के अंदर. When concentrated, अच्छा जी देखिए concentrated जब आयन, आपने अगर आप फोकस करना है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड में OH के अलावा जो दूसरा नेगेटिव आयन होता है वो डिस्चार्ज होता है. ओके, बट सल्फेट एक्सेप्ट सल्फेट एंड नाइट्रेट, बिकॉज सल्फेट एंड नाइट्रेट नेवर एवर डिस्चार्ज. ओके, so when concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed, chlorine is formed at positive electrode and hydrogen at negative. So खुद ही बता दिया. So okay, construct ionic equation to show the formation of chlorine at the positive electrode. Ionic equation का मतलब वही हाफ इक्वेशन जिसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इक्वेशन भी कहते हैं, बट यहाँ वो ऑक्सीडेशन इक्वेशन होगी. टू क्लोराइड आयन जाएंगे इकट्ठे, will lose 2 electrons and will form Cl2. okay, तो उसकी फिजिकल स्टेटस में कहीं नहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं. Explain why hydrogen is formed at the negative electrode rather than sodium. तो हम ये कहेंगे because hydrogen is lower in the discharging series than sodium. Reactivity series भी लिख सकते हैं, discharging दोनों वर्ड्स ठीक है. तो हम कहेंगे कि because hydrogen is lower than sodium in the reactivity series. Reactivity series. Okay, next. Name a metal manufactured by the electrolysis of molten ionic compound. Okay, in our syllabus, there is manufacturing of aluminium by the electrolysis. अच्छा उसके अलावा all the metals which are present above the carbon in the reactivity series can be obtained by the electrolysis. आप कोई भी लिख सकते हैं. Extraction होती है. हाँ बिल्कुल, एक्सट्रैक्शन कार्बन के ऊपर वाले को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं ना. ओके, सो वी कैन राइट हियर एनी मेटल. तो आप एल्यूमिनियम लिख दें बिकॉज इट इज आवर सिलेबस, हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है. आप सोडियम में लिख सकते हैं, कैल्शियम भी, पोटेशियम भी लिख सकते हैं. नहीं पी भी नीचे आता है, पी भी नीचे आता है. वो नहीं आएगा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Hematite, limestone, and coke are heated together in a blast furnace in the manufacture of iron. State why each of the following compounds are needed in the blast furnace. जी सोचे कि हम ये वाले कंपाउंड क्यों यूज करते हैं. Okay. Okay, exactly. So हम इन सबको क्यों, hematite source of iron, it's the source of iron. It's iron मिलता है ना. hematite क्या होती है बच्चा, Fe2O3 में इसमें जो component होता है. Okay, limestone calcium carbonate होता है. Why it is used? To get calcium oxide which react with acidic impurities to form slag, है ना. तो ये आप लिखें कौन करेगी, नहीं नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, लाइमस्टोन सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट ये क्या करती है बच्चों, कंबाइंस विद SiO2 to form slag. Okay, coke is here now. It combines with oxygen to form CO, carbon monoxide. And carbon monoxide is the main substance that reduces iron oxide. क्या क्या? That reduces iron oxide. So coke, source of carbon that reacts with oxygen to form CO. तो बाकी इसकी फर्दर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. Next, iron has a high melting point because it has strong metallic bonding. Described using the label diagram. Metallic bonding लोग बच्चों क्लास 9 से पढ़ते आप आ रहे हैं, बट इसमें एक चीज का ख्याल रखना, पहली लेयर आयंस की आपने इस तरह से बनानी,
दूसरी लेयर इसके सेंटर में बनानी है, एंड थर्ड लेयर फिर पहली के सामने बनानी है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड करेक्ट वे। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस शो करने अराउंड एंड इनसाइड, दोनों हर जगह। So this is the diagram because it should be labeled. So these are positive ions, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब चलेगा। ओके, ई माइनस करके आप इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी। अगर डिस्क्राइब द मेटालिक बॉन्डिंग, डिस्क्राइब भी हमने करनी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इट इज attractive force between positive ions and CF इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख लो, सब चलेगा, सब ठीक। एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मैंने जो डायग्राम में वो लिखा है वही वर्ड नीचे भी लिख लिया, CF इलेक्ट्रॉन लिखना, कुछ भी लिखो। When iron is made into the alloy steel, the properties of iron are changed. Okay, high carbon steel are stronger, ठीक है, हाई कार्बन स्टील स्ट्रॉन्गर होते हैं, खुद बता दिया, देन आयरन बेटर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब इजीली ब्रेकेबल बिकॉज नॉट मैलेबल। ओके, स्टेट अ प्रॉपर्टी ऑफ लो कार्बन स्टील, तो अगर बच्चों हाई कार्बन स्टील स्ट्रॉन्गर है तो लो कार्बन स्टील क्या होंगे, सॉफ्ट और मैलेबल भी लिख सकते हैं, नहीं वो नहीं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं। ओके, व्हेन मैग्नीशियम powder is added to aqueous iron sulfate, the following reaction occurs. Okay, explain using electron transfer why iron ions are reduced in this reaction. तो iron वो क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताइए, तो iron ion क्यों reduce हो रहा है, because iron ion are gaining electron, है ना, Fe+2 is gaining 2 electrons, इसलिए इसकी ये रिडक्शन। अब ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन आयन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +2 to 0, वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जरा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्लास एंड होने लगे, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।